Is not just a computing term. We have to understand it. It is a interdisciplinary topic which consists of computer science as a whole, because the coding part is taken care by computer science. Then cognitive science is also involved, psychology is also involved, and there are linguistic and obviously neuroscience, because now we are talking about deep learning, we are talking about machine learning. So at that particular point, neuroscience come into picture. So basically the main aim of AI is to build system that thinks, learn and adapt as human beings adapt the things. The most important part when we are understanding AI is data, algorithm, neural network, and machine learning. These are the four basic components of AI. So when we talk about data, so data is basically the fuel of AI. Your data should be correct, qualitative, and whenever you are referring to any data, it should give you certain right information. So data is the foremost important thing about AI. Then algorithm, that is step by step process when you solve a problem. So that is the second component. The third is neural network. As human is having brain, in our brain we have neurons. So the movement of neuron decide how we are taking a call or taking a decision or understanding a scenario. So here also in AI, there is a neural network. That means you are mimicking or making a copy of human brain. And when we talk about machine learning, that means you make your computer learn using data, using algorithm, and using neural network. If you make your machine to learn and predict or decide or giving you a supporting system to act on a certain manner, that is basically machine learning. So AI is made up of the four components: data, algorithm, neural network, and machine learning. And it is a multidisciplinary field where computer science, cognitive psychology, philosophy, linguistic, and neuroscience all integrate together. So now just understand कि ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे फील्ड इसमें इंटीग्रेट हो रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली interdisciplinary, or there are multiple field. So what are the key features of AI? So the first and foremost is emulate human capability. So we believe that earlier we were creating reports as a human, depending upon our experience we are creating report, but now ChatGPT is creating the report. We were writing the assignments, we were creating the assignments, we are creating the solution, but now ChatGPT or Gemini is doing. That means basically they are emulating our capabilities. Then solve complex problem, then model human thoughts as we are thinking. Emotional AI is all about mimicking our emotional intelligence in a machine, if we integrate it within a machine. Then automate intelligent task. If some work require, earlier human were making decision, now machine is making decision. So you are making, through AI you are making your machine unable to decide
इट इज़ इंडिपेंडेंट. पहले हम बोलते थे कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता, लेकिन आपने वो दिमाग दे दिया है. और दिमाग देने के लिए आपने क्या यूज़ किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड ऑटोमेटिकली इट अंडरस्टैंड and automate the task and then decide how to behave, how to react, how to learn. All these capability you are adding through AI. So what are the key features of AI? That is emulate human capability, solve complex problem, then obviously modeling the human thought process. So these are the key features. As we have discussed the key features, now what AI enables computer to do? As I said, it makes it learn. How it learn? Via machine learning. It makes it recognize what? It understand your pattern. Even your chat GPT understand your pattern. If you use chat GPT for 5 days or 6 days, it start understanding your pattern. So pattern recognition is done with the help of AI. Then understand. When you using voice assistant, it start understanding your voice, interpreting your voice. So that is an example of AI, that is natural language. And when decide and predict, because now most of the OTT platforms, they are using recommendation system. Many of the e-commerce sites, they are using the recommendation system. So that recommendation is basically decide and predict. So that means your computer now decide and predict and then give you feed that what you have to do. So that is what computer can do with the help of AI, or an AI enables it to learn, recognize, understand, decide, and predict. These are the basic tasks which computer can do now because of AI implementation. We have discussed the what computer can do with the help of AI, but now let's understand the different branches of AI. The first branch is machine learning. Machine learning is you are learning from data, your pattern. As your Insta account, you see the feed, you see the reel, and it's keep on, well, when you swipe, it recognize your pattern, learns your pattern, and then it shows the feed which you like. That means you are spending more seconds on a particular reel, so the same theme or same general reels keep on feeding in your Insta account. So that is one example of learning from data, that is machine learning example. Then natural language processing, your voice assistant, Google Assistant, which you are using, your Alexa, your Siri, all these are example of natural language processing. When we talk about computer vision, where we can see and interpret, that means if as our eye works, same way computer can see and interpret the object, which is used in all self-driven cars. So they can predict what object is there. So object recognition is also part of your computer vision. Then we talk about robotics. Nowadays, you can see robots at like human-like structures. So which can move, which can decide, which can predict. So for a particular task. And there are robots which are used nowadays in health system. You number of times आप सुनते हैं कि भाई ऑपरेशन करेंगे रोबोटिक्स के थ्रू. So robotics के थ्रू ऑपरेशन करेंगे, that means task automation is done. Certain predefined task is automated with the help of robots where human is not required. So that is basically the robotics area or branch. Then expert system. When we talk about expert system हम नॉर्मली भी बात करते हैं कि भाई ये बंदा इसमें एक्सपर्ट है मीन्स उसको इन आउट सब कुछ पता है. सो सेम वे योर एक्सपर्ट सिस्टम इज़ अ रूल बेस्ड सिस्टम विच हेल्प्स यू टू टेक अ कॉल और मेक अ डिसीजन. सो डिसीजन मेकिंग is a part of AI, which as such we are seeing that you enter something in ChatGPT, some question, and it give you a reply. So it is a rule based on keywords. It's not an example of expert system, but in medical, many systems are such which help you to take a call. So that system are called expert system, which is rule based decision making system. Then another branch is deep learning, that is a neural network. Nowadays, maximum research is going on in this particular area, that is deep learning, because you are making computer to think and behave like a human. And basically we think and behave as our neuron works, क्योंकि हमारे दिमाग के न्यूरॉन ही हमें हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में. कई बार हम डाउन होते हैं तो हमारे न्यूरॉन भी डाउन होते हैं.
दैट मीन्स उनमें उतना एक्टिवेशन या मूवमेंट नहीं होता, बट हम बहुत एक्साइट होते हैं तो न्यूरॉन भी एक्साइट होते हैं. तो सो द सेम वे if we can implement such type of structure in machine, that is a part of deep learning. Then reinforcement learning, as a human being we keep on learning through our experiences. So if we make machine to learn through experiences, through the feedback, that branch of AI is called reinforcement learning. And fuzzy logic, when we talk about uncertainty, sometimes we say bhai tum bahut fuzzy ho means you are not clear whether you want this or you want that. So if you have a condition of uncertainty or confusion, you can, that branch of AI is basically the fuzzy logic, which handles the uncertainty. So if we talk about branches, there are numerous branches of AI, but these are the very commonly used branches of AI, where machine learning, natural language processing, computer vision, robotics, and slowly we talk about all these branches in the coming sessions. Because this is an introductory session, so we are just talking about the outer picture of it. अभी तक हमने देखा कि AI क्या है, कंप्यूटर को वो क्या कराती है, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं. अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में. तो लोगों को लग रहा है AI कोई नई टर्म है. नहीं, AI बिल्कुल नई टर्म नहीं है, बहुत पुरानी टर्म है. इसका ओरिजिन बहुत पहले हो गया था. तो इसकी जो शुरुआत हुई थी उसको हम बोलते हैं प्री AI फाउंडेशन, दैट इज़ बिफोर 1950 जो काम हुआ था उसको हम बोलते हैं pre-AI foundation years, where this computing terms already evaluated. And then there's a birth of AI, which is done in the 1950s. And this term coined in 1956, exactly, the term artificial intelligence. Where initially 1956 to 1974, there was a huge hype about what is AI, how it is working. The Turing machine came into picture. It started taking certain call, making rule-based decision sort of thing. So people were having huge expectation from AI that time also. That means 1956 to 74. But slowly, because of the computing power limitation, because of the capability of computer system, it couldn't approach or could not achieve what was hype created about it. जो उसके बारे में बोला गया था कि भाई हाँ AI ये करेगा वो करेगा, तो ये सारी कहानी 1956 से 74 में चली. लोगों को लग रहा था कि AI बिल्कुल रिवोल्यूशन ला देगा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस की वजह से वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए जो लोगों के दिमाग में हाइप था. तो उसके बाद एक समय ऐसा है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट AI विंटर. विंटर का मतलब सर्दी आ गई, सर्दी में ठंड आ गई, यानी कि पूरा का पूरा एरिया ठंडा हो गया. मीन्स AI के बारे में लगा कि नहीं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता. एंड लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो फंडिंग आ रही थी, वो सारी स्टॉप हो गई. और ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट AI विंटर, जहाँ पे लोगों को लगने लगा भाई नहीं, AI तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही हाइप क्रिएट किया गया था. लेकिन फिर क्या हुआ, 1980s के बाद 87 में फिर से रिसर्च शुरू हुई और जो सबसे पहले एक्सपर्ट सिस्टम आया. तो ये जो पूरा दौर था 1980 से 1987 तक का, जैसे 80 to 87, दैट बूम केम इनटू पिक्चर कि येस AI इज़ देयर. कैसा हुआ, वहाँ पे लैंग्वेजेस आ गई, लिस्प आ गई, रूल बेस्ड सिस्टम बनने लग गए, और एक्सपर्ट सिस्टम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम्स बनने लग गए. तो तब से फिर से एक थोड़ा सा AI का माहौल क्रिएट हुआ कि हाँ AI ये कर सकती है. फिर उसके बाद 1990 से 2000 में जो क्रिएट हुआ, दैट क्रिएटेड एज इन 1990 to 2000 कि मशीन लर्निंग जैसा कंसेप्ट आया. सो 1990 से 2000 में जो नई टर्म आ गई वो आ गई हमारी मशीन लर्निंग. तो ये जो मशीन लर्निंग का पूरा कंसेप्ट था, यहाँ से इमर्ज होके आया कि हमने समझने लग गया कि लर्निंग एल्गोरिथम है, और ये एल्गोरिथम ने एक्चुअली समझना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमारे पास कंप्यूटिंग पावर आने लगी थी जो कि यहाँ पहले मिसिंग थी. तो टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन के साथ साथ कंप्यूटिंग पावर इम्प्रूव हुई, हमारी कैपेबिलिटी इम्प्रूव हुई, कैपेसिटी हमारे कंप्यूटर की इम्प्रूव हुई. उसकी वजह से क्या हुआ, हम इम्प्लीमेंट कर पाए एल्गोरिथम्स को. हमारे पास स्टोरेज था, जो कि पहले बहुत इशू रहता था स्टोरेज का. हमारे पास प्रोसेसर्स थे, अर्लियर वी वर हैविंग इश्यूज ऑफ प्रोसेसर. और जैसे ही मशीन लर्निंग इमर्ज हुआ, उसके थोड़े टाइम के बाद ही जो इमर्ज हुआ वो है जो मॉडर्न AI आज के दिन हम देख रहे हैं, दैट इज़ आफ्टर 2010
till present, the evolution which we are seeing in the field of AI, और आज के दिन सारी दुनिया AI की ही बातें कर रही है. तो ये जो दौर है ये शुरू हुआ 2010 के बाद, जहाँ हमारे पास डेटा की बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कंप्यूटिंग पावर हमारी बहुत बढ़ गई, कैपेबिलिटीज़, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई. उसके बाद ये पूरा का पूरा जो फील्ड है ये हमारा पूरा का पूरा इवेल्युएट हुआ. सो दिस इज बेसिकली, so the first we have discussed pre-AI foundation. That means, as I said, AI is nothing new in AI. It started very early, before 1950. So 1800 Charles Babbage has designed analytical engine. And then in 1943, there is a mathematical model of a neural network has been generated. So this concept is very old because already we are talking about the neural network, right? And Charles Babbage, who is called father of computing, so he has already created an analytical engine. So that is the era of pre-foundation era of AI. When we talk about the second, that is birth of AI started from 1950. That is 1950, the first Turing machine. Many of you have heard about this word, Turing machine. So the first Turing machine came into picture, which is basically a intelligent machine which make decision. And in 1956, the term AI is coined, that this is artificial intelligence. So earlier, also we are using this term AI. In 1956, this term came into picture. So you can imagine that before almost 50 years, this term was there. And initially, the most of the work is done in symbolic AI and logical based problem solving, and later on, it comes on the rule based decision making. So this is where AI generated. So the first chatbot came into existence once the AI has taken birth. So the first chatbot was Eliza, and what it was doing, it was basically conversing like we are converging with a chatbot nowadays. But obviously, it was not like that. It was very simple one, and you are just to see here, you can giving certain questions and it is giving you certain answer, but very, very specific answer and small answers, not the powerful chatbots which we are using right now. So earlier, there were two languages, that is Lisp and Prolog, which were used. Both are actually rule-based languages, which generally used for creating expert system in that era, right? And obviously, people were thinking, yes, this is going to change the way of living. That time also the same hype was created for AI, but that time we were having a limitations of computing power. So that is the reason that after this whole hype till 1974 or 80, what happened? There comes the phase which is winter AI. Winter AI. So already, as I said, that funding cuts due to lack of progress. That time, people had thought of number of projects were working, but due to the capability which they have seen a picture, that was not achieved. यानी कि आप वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे. जो भी आपने प्रोग्रेस सोची थी कि हमारा ये कर देगा, बट क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें थी, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, हार्डवेयर स्ट्रक्चर, जो हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी थी वो बहुत लिमिटेड थी, उसकी वजह से वो अचीव नहीं हुआ तो क्रिटिसिज्म हुआ. और उसके बाद काफ़ी सारी कंस्ट्रेंट की वजह से एक फेज़ ऐसा आया जहाँ पे AI को लोगों ने सोचना थोड़ा बंद कर दिया AI के बारे में. तो वो एक लो फेज़ था AI के लिए, एंड दैट फेज़ इज़ in the history is called first AI winter. After that, again, expert system came into picture in 90s, 80s. And what happened in that? The first rule-based system, that is Mycene, was developed. Now, it's basically a medical diagnostic system which was created, and it is completely a rule-based system. And then people start taking an interest that yes, we can create more and more expert system using Prolog and Lisp, because that were the two languages which was used. And then government and companies started involving or investing in AI. So that is where the revival came, through expert system.
And initial expert system Mycene was developed for medical systems. So nowadays also we are doing more and more research in medical areas. If we talk about the capabilities of AI, and then comes the machine learning. The machine learning part has completely changed the thinking pattern of AI. And what happened? Earlier in machine learning, most of the AI were reactive. Reactive means once some action is taken, then there is a reaction. So when there is a reaction, that type of AI is called reactive AI. So through machine learning, they come with that reactive sort of system. And in 1997, that is IBM Deep Blue defeat world's number one chess player. And that that winner played against the computer. So, and at that time, it's completely rule-based chess board, and one side is the word winner, and another, that means human, and other side is computer playing. So that time actually that uses machine learning algorithm to have a reactive AI sort of thing, and that is the revival. Basically, after expert system, machine learning has completely changed the picture of artificial intelligence. And then comes deep learning. And you have in 2020, after 2010, actually Google came into picture in 2000s, and because of that the search engine become very powerful, data centers become very powerful, computing power increase like anything, and all those things added for the implementation of AI. And that is basically where comes into after 2010. And nowadays in 2012, AlexNet win ImageNet with deep neural network. That means deep learning started working in 2012, and then obviously 2016. Then comes the engines, generative pre-trained engines came into picture, and we started using natural language processing and all those things. And nowadays, which we are using, we are in actually in this era where deep learning, machine learning, NLP, computer vision, all these fields are working together to achieve or giving the facility or applications to the users. So we are right now here, that is deep learning. So if we talk about the history of this, so it started very long back. Nothing in new, this term is coined in 1956. That means almost 59 years back. So just understand that how much research has been done when we are here, we are standing right now. And if we talk about the types of AI, so if we talk about types, there are basically, I have divided into two things. One is based on capability and one is based on functionality. समटाइम यदि मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं कि भाई किसी चीज़ के लिए मैं कैपेबल हूँ लेकिन मेरी करने की इच्छा नहीं है, सो दैट मीन्स आई एम नॉट फंक्शनली एक्टिव, बट मेरा काम है, मेरी नौकरी है तो मुझे करनी है, सो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल. So on these function and capability basis, it is again divided. So if we talk about capability, this is narrow, general and super AI. And if we talk about functionality, that is reactive, limited, theory of mind and self-aware. So if I just explain it, what is narrow AI? Narrow AI is just making a predefined task. For example, your voice assistant is an example of narrow AI. It's meant only to recognize the voice and react. So that is an example of narrow AI, which is meant for a specific task. If we talk about general AI, it is used for making decisions. Still research is going on. And if we talk about super AI, it's completely means you are giving superpower to your system, which is again, right now it's a theoretical concept. Still research is going on. When we talk about reactive, as I said, if you are playing chess, or you are playing any game which is making their own call, that is basically a reactive AI. Already a move is fed there and it will react according to that move. When we talk about limited memory, so limited memory is basically when you start taking a call based on your experiences, that is basically the limited memory. When we talk about theory of mind, means as human mind thinks, same way if your AI can think of. So based on functionality, that emotional AI will come into theory of mind. And we talk about self-aware. So if
मैनी टाइम्स हम सोचते हैं कि हम अपने बारे में जानें, तो यदि कंप्यूटर भी अपने बारे में जानने लग जाए, एआई खुद से ही समझने लग जाए, अपने से कॉन्शियसनेस उसमें आ जाए, जैसे हम बोलते हैं आत्मा से हमारे में कॉन्शियसनेस आती है कि भाई अपने से पूछो, अपने को समझो, वो इस तरह के फीचर यदि एआई में आ जाए, जो कि अभी कंप्लीटली सपना है, ड्रीम है, सो दैट टाइप ऑफ एआई इज कॉल्ड सेल्फ अवेयर एआई. So AI is divided into based on capability and based on functionality. Here, narrow AI, task specific. Current usage is basically whatever you are doing at that particular time is narrow AI. Then general AI is not yet achieved, as I earlier told you. Super AI beyond human intelligence means हम ये मान के चलें कि भाई जैसे सुपर भगवान आ गया, अपने आप ही डिसाइड करेगा, अपने आप ही कॉल करेगा, सब कुछ अपने आप करेगा. तो इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट. स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव. Reactive AI, no memory, respond only. That means, as I said, chess, game of chess or any game where AI is taking a move, so it is a reactive. If you, the player one, if human is playing with you, then human player is taking a call or taking a move, then you react according to that move. And chess is a one example of reactive. Limited memory is using past data to decide or taking a call. Theory of mind, understand emotion. So now there are many emotional apps available in the market, but all are just machines which is feeded with the data. So never ever think कि आप मशीन इंसान से बात कर रहे हैं, आप मशीन से बात कर रहे हैं. वो जब आप मशीन से बात कर रहे हैं आपको फील ऐसा आ रहा है कि इंसान से कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि थियोरी ऑफ माइंड का कंसेप्ट उसमें डाला गया है. तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है हमें कि हमें हमसे इंसान बात कर रहा है. वेन एवर यू आर टॉकिंग टू ए चैट बॉट or AI therapist. So it is basically a conceptually things which is added to it, जो उसमें already feeded questions के answer दे रहा है आपको. And self aware is completely hypothetical concept. जैसे हम बोलते हैं शरीर में आत्मा आ गई तो कॉन्शियस आ गई, तो वो चीज़ यदि हम मशीन में डाल देंगे जो कि पूरा थियोरेटिकल है, अभी कुछ फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, बट दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ अवेयर AI. So now we have understood the history, we have understood the branches, we have understood the types of AI. The most important part is understanding through an example what exactly AI is and how it works. So let's take an example of virtual assistant. Most of us are using virtual assistant. यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा, hey Siri, which day is today? So how this app react, your voice assistant react to it, कौन कौन सी ब्रांचेस, कौन कौन सी चीज़ें इसकी पिक्चर में आ रही हैं, वो कौन सी आ रही है. सबसे पहला जो काम है वो आपकी आवाज़ को समझेगी. दैट मीन्स स्पीच रिकॉग्निशन. दैट इज लिसन, वंस इट लिसन योर वॉइस, इट्स स्पीच रिकॉग्निशन. टेक्निकली भी से कि उसने आपकी आवाज़ को समझा. और जनरली जो आपके वॉइस, जैसे आपने फीड करके रखा है कि मेरी मम्मी को फ़ोन करना है तो आपको ये नंबर मैं बोलूँगा कॉल माताश्री, तो ऑटोमेटिकली उसने आपकी आवाज़ पहचानी, आपके फ़ोन बुक में गई, माताश्री से मैच किया और उनको डायल कर दिया. राइट? तो हुआ क्या, उसने पहले आपकी आवाज़ सुनी, फिर उसने समझा. क्या समझा उसने? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू उसने इंटरप्रेट किया कॉल किसको करना है, माताश्री को. तो माताश्री को वो आपकी बुक में, पूरी फ़ोन बुक से निकालेगा और उसके साथ क्या करेगा, मैच करेगा, और मैच करके उस API के थ्रू मैच करके आपको कॉल कर देगा. ठीक है? तो ये जो लाइन उसने बोली, हे सीरी विच डे इज़ टुडे, तो उसने किया क्या, सबसे पहले उसको सुना यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन, फिर उसने उसको समझा यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पिक्चर में आया, ये ब्रांच पिक्चर में आई, फिर उसने उस ऐप के थ्रू पता करा कि अच्छा आज कौन सा वार है, तो उसको लगा ओह आज तो सोमवार है, मंडे है आज, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा बोल के, दैट इज़ टेक्स्ट टू स्पीच. यहाँ तो API उसको टेक्स्ट में ही मंडे लिख के देगा, लेकिन जो वॉइस असिस्टेंट है उसको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके उसको बता देगा कि टुडे इज़ मंडे. सो दिस इज़ द वे योर वर्चुअल असिस्टेंट वर्क्स. सो उसके साथ सोचो आप कितनी सारी ब्रांचेज ऐड हुई, आपका NLP ऐड हुआ, स्पीच रिकॉग्निशन ऐड हुआ, एप्लीकेशन आई, और फिर आपका कन्वर्टर ऐड हुआ, दैट इज टेक्स्ट टू स्पीच. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI. The another example of AI, if we talk about, is personalized learning or adaptive learning. How AI is helping us to understand the pace,
to which we can learn, because in a class there is always some are active learner or smart learner, some are okay learner, average learner, and some are weak learner. So if we have this type of class, so it's very difficult to manage कि आपको तीनों के तीनों कैटेगरीज को कैसे मैनेज करें. लेकिन AI की हेल्प से आप अडेप्टिव लर्निंग कर सकते हैं. और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया Duolingo, विच इज़ एन एप्लीकेशन टू लर्न लैंग्वेजेस. तो वो क्या करता है, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, फिर उसके हिसाब से उसको उसके लिए असाइनमेंट तैयार करता है, एक्सरसाइज तैयार करता है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ के. ऐसा नहीं है कि जैसे टीचर जो नॉर्मली क्या करते हैं, एक असाइनमेंट दी पूरी क्लास को दे दी, नहीं. वो क्या करेगा कि स्मार्ट लर्नर के लिए अलग असाइनमेंट बनाएगा, एवरेज लर्नर के लिए अलग से बनाएगा और पुअर लर्नर के लिए अलग से बनाएगा. तो वो पहले तो अपने यूज़र को, जो भी उस एप्लीकेशन को यूज़ करे, उसको समझेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको रिकमेंडेशन देगा, और डिफ़िकल्टी लेवल भी उसी तरीके से. उसको लग रहा है कि कोई सीधा सेकंड स्टेप पे जा सकते हो तो सेकंड स्टेप करो, किसी को लगेगा पहले स्टेप से 0 स्टेप की भी ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली वो उसके लिए लर्निंग पाथ डिसाइड करेगा और इंस्टेंट फीडबैक देगा, जहाँ से उसको पता चलेगा कि मुझे कैसे सीखना है. सो दिस इज़ हाउ यूज़ ऑफ AI कैसे काम करेगा. डिटेक्ट करेगा कि आप जब आप क्विज़ देंगे तो आप डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई, इसको ये क्विज़ में इतने नंबर आए और इसको इतना टाइम जा रहा है ये क्विज़ देने में. तो उसके थ्रू वो क्या जानेगा, आपका लेवल, कि आपका कौन सा लेवल है. तो मुझे आपको 0 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, 2 से करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि इट्स अडेप्टिव लर्निंग बेस्ड ऑन द यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है. और एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू फोकस मोर ऑन फ्रैक्शंस. जो टॉपिक पे उसको लग रहा है कि आपको ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत है, उस पर वो ज़्यादा टाइम देगा, यानी कि उसकी आपकी लेसन प्लान भी अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से वो आपको असाइन करेगा लेसन्स, कि मुझे पहले ये कराना पड़ेगा, दूसरा. तो जो आपकी पेस है, आफ्टर क्विज उसको समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है. वंस इट अंडरस्टैंड योर लेवल, सो बेस्ड ऑन दैट it will decide lesson, it will decide quiz for you. So that is basically an example of. और इससे क्या होगा कि आपको जल्दी समझ, आपको लगेगा वो ये तो मुझे समझ गया, और वो क्योंकि वो आपके हिसाब से देगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा. कई बार ऐसा होता है कि टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और हमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम इधर उधर देखने लगते हैं, हम कंसंट्रेशन से काम नहीं करते हैं. तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पेस पे चलेगा, वो आपके हिसाब से चलेगा. सो दैट इज़ एग्जाम्पल. और इसके इम्पैक्ट इंक्रीज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. आपको लगेगा ओहो ये तो बहुत आसान है, ये सब्जेक्ट भी मैं सीख सकता हूँ. तो आपको एक ऑटोमेटिकली सीखने की इच्छा होगी. अक्सर ये होता है कि जब हमें इच्छा नहीं होती है या समझ नहीं आ रहा होता तो हमारा ध्यान चला जाता है, पर यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से, आपकी पेस पे, आपके लेवल के हिसाब से आपको सिखा रहा है. और इससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा होगी, इफ़ेक्टिव होगी. तो AI का ये जो पैटर्न है जो आपको हेल्प करता है, अडेप्टिव लर्निंग है, या आपके पास अडेप्टेबिलिटी है, या वॉइस असिस्ट, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं. प्रोडक्टिवली आप AI को के फीचर्स को यूज़ कर पा रहे हैं.